this should be an absolute cracker. कल सिद्धार्थ और मैंने ही इन दोनों के मुकाबलों पर कमेंट्री की थी एंड वी अंडरस्टैंड द टैलेंट दैट इज कमिंग योर वे. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे हुक्ड टू स्टार नेटवर्क, खेलो इंडिया यूथ गेम्स. और अब ये हैं रेड कॉर्नर में तमन्ना. हमने प्री शो में इनका एक पैकेज भी देखा था. 17 गर्ल्स का मुकाबला और रेड कॉर्नर में होंगी. विजेंदर के गांव से हैं, साक्षी से भी काफी प्रभावित रही हैं. उन्होंने भी Sakshi Chaudhary is her cousin, one of the brightest prospects in Indian boxing. Sakshi Chaudhary, remember, she is also coached by the great Jagdish Singh. So is Tamanna. That is her opponent, Gitika. Jagdish is, of course, Vijender's coach, who also trained Sakshi Chaudhary, who is now being trained by another great boxer, Muhammad Ali Kamar of West Bengal, who became the first boxer ever to win a CWG gold medal. He really set the bar for others to follow. Manchester 2002. I was lucky enough as a kid, I watched that bout live, and boy was Muhammad Ali Kamar on fire. He really was Muhammad Ali that day. you're still a kid, sir. Very much so. Kamar, of course, as we mentioned, is training Sakshi Chaudhary along with the other women boxers that we have, and that is the legacy that Tamanna comes from. Gitika, of course, we saw her yesterday. She was superb. That's why she's made it here. Haryana, as we had expected, is dominating the early rounds of boxing here at the Sai Center at Paltan Bazaar in Guwahati, Assam. That's where we are coming to you live from the 3rd edition of the Khelo India Youth Games. 2 goals for Haryana. That's the story so far, in case you're just joining us. And another gold is assured, regardless of what the result will be in this bout. जी हाँ, क्योंकि रेड कॉर्नर में तमन्ना हरियाणा की, ब्लू कॉर्नर में गीतिका हरियाणा की. 2 मिनट के 3 राउंड यहाँ पे होने वाले हैं और एक्शन पैक्ट होंगे, नो डाउट. दोनों ने बड़ी कन्विंसिंग तरीके से, तमन्ना 5-0 और गीतिका 4-1, अपने अपनी प्रीवियस बाउट्स यहाँ पर जीत कर आई हैं. आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं 48 किलोग्राम कैटेगरी का, और इस वेट कैटेगरी का सबसे बड़ा वो होता है सिद्धार्थ की बॉक्सर अमूमन निम्बल फुटेड होते हैं, मूवमेंट आपको बड़ी स्विफ्ट नज़र आती हैं, और इसीलिए पकड़म पकड़ाई, चेजिंग ईच अदर हैपेंस मोर. भिवानी में एक चुटकुला सुनाया जाता है, जब आप अगर जाएंगे भिवानी, दुनिया बीबीसी देखती है मगर भिवानी में हम एक ही बीबीसी देखते हैं, वो है भिवानी बॉक्सिंग क्लब. लवली. और ये एक देखिए कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उस एक स्टेट के लिए, उस एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, जहाँ पे आपने समर्पित कर रखा खुद को. एक कल्चर है. हम प्री शो में भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा में कई दफ़ा आप स्कूलों में जाएंगे तो ये रिक्रिएशनल तौर पर भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, और वो खेल जो आप शौकी तौर पर खेलते हैं फिर आपका प्रोफेशन बन जाता है. कबड्डी कह लीजिए, रेसलिंग कह लीजिए. इम्पैक्ट सोचिए पैडी, आप तमन्ना कम्स फ्रॉम अ फैमिली ऑफ एकेडमिक्स. साक्षी चौधरी जो उनकी कजिन है, उनके जो फादर और मदर, ग्रैंडफादर वाज अ प्रिंसिपल, स्कूल प्रिंसिपल्स थे ये. बट विजेंदर सिंह वाज सच एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ देम दैट दे हैव टेकन अप बॉक्सिंग, एंड लकीली द फैमिली हैज स्टूड बिहाइंड देम. बिल्कुल. और आप इतना बड़ा स्रोत बन जाते हैं कि इतने सारे टैलेंट को आप एक रियलिस्टिक सपना दे देते हैं जो कि हकीकत में तब्दील हो सकता है. तमन्ना बनाम गीतिका, और फिलहाल 20 सेकंड इस मुकाबले के बीत चुके हैं. एक बार फिर से आपको अवगत कराते हैं कि 3 राउंड होंगे 2-2 मिनट के. मैं पता मेरे साथ सिद्धार्थ, और एक बात होता है कि गोल्ड सिल्वर हरियाणा को जाएगा. या लाल जर्सी में है तमन्ना, ब्लू में है गीतिका, एंड it's a cautious start by both, and that's welcome because we've been breathless since this morning, because especially the last bout, the intensity of that bout was so high. Tamanna taking the initiative, upping the ante here. No doubt. Good images. मेरे को नहीं लगता अब तक कोई पंच यहाँ पे काउंट हुआ होगा, क्योंकि जब सॉफ्टली लैंड करता कोई भी पंच, वेल डन, और जब आप एल्बोज को स्कोर करते हैं तो वो स्कोर माना नहीं जाता है. बॉक्स को बॉक्स करते हैं तो स्कोर नहीं होता. ग्लव्स को बॉक्स नहीं कर सकते आप. यू हैव टू हिट द बॉडी, द फेस, chest. Good thing about boxers that come out of the stable of Jagdish Singh is they are technically very good. Many boxers from Haryana and North India in the 80s and 90s, we had a tie-up with Cuba. They went to Cuba, amateur boxing. They are the USA of basketball. Cuba in amateur boxing, equivalent, more than 30 gold medals to that nation. So a lot of them learned a lot from those boxers and those boxing coaches, and have come and given us some technically very proficient boxers
जी हाँ, टेक्निक बिकम सच अ वाइटल कंपोनेंट। आपकी शैली अगर अच्छी है, अब ये सिर्फ पावर गेम नहीं है, ये सिर्फ स्विफ्ट मूवमेंट का खेल नहीं है। विजेंद्र सिंह जितनी भी बाउट्स आप उठाकर देख लें, बड़ी इंटेलिजेंट बाउट लड़ते हैं, कभी ज़्यादा प्रभावी नजर नहीं आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि फिनिश के मार्क्स मिलते हैं। इवेसिव एक्शन आपको खेल देना, अपने ओपोनेंट का पंच सॉलिड लैंड नहीं होने देना अपने ऊपर। ये मुकाबला पहले राउंड समाप्त। गीतिका ने मौका जरूर देखा था and she went for the jab, but the bell had gone. She was just a second late, so the jab won't count. और ये जो रेस्ट पीरियड आपको बीच में मिलता है, इसमें आपकी मांसपेशियां रिलैक्स कर दी जाती हैं, कोचेज आपके कान में कुछ कह देते हैं। ये देखिए यहाँ पर टीम वर्क चल रहा होता है। ब्लू कॉर्नर में आपकी गीतिका, रेड कॉर्नर में तमन्ना। सिद्धार्थ, anybody's game this. Oh, absolutely. This is anybody's round. There are 2 more to go. 3 rounds of 2 minutes each. The first one has just come to an end. It's all about instructions. It's all about cooling down for just a little bit, getting that heart rate back down, because it gets very aggressive in the center of the ring, and when it becomes that, it's easy to lose control of your breathing. Absolutely. Now this is good one. And suddenly, what the blue corner does immediately, Gitika wraps around her opponent's body. This is good. This is solid. But again, I mean, they also know the art of scoring, and the art of scoring is through cleanliness. The art of scoring comes through solid, heavy punches landing clearly. Well done, great evasive action. Tamanna, good. She had her on the ropes there, but Tamanna did well to get out of that corner, and that is where you need your footwork. Complex footwork shown by Tamanna. That is what I was talking about. Proficiency in technique. Footwork plays such a big part. To say though, the best footwork today was by Kalpana in the first bout. She was awesome. Absolutely, and that was exactly what caught both of us in our attention. I mean, we were completely talking about it in the same breath, same time. We held the mic at the same time, the same thing. हरियाणा के नाम गोल्ड मेडल पक्का है इस मुकाबले में। हरियाणा के नाम सिल्वर मेडल भी पक्का है, क्योंकि दोनों ही बॉक्सेस जो आप देख रहे हैं, रेड कॉर्नर में तमन्ना और ब्लू कॉर्नर में गीतिका, दोनों ही हरियाणा से आती हुई ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा प्रभावी इस समय लग रही हैं तमन्ना। जी हाँ, और पूरा एहसास होगा इस बात का गीतिका को। दूसरे राउंड में है हम, एक राउंड आना बाकी है, और अब तक जी हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तमन्ना का प्रदर्शन ज़्यादा अग्रेसिव रहा है निश्चित तौर पर, और इंटेलिजेंटली आपको बाउट लड़नी पड़ती है। गए वो जमाने ज्यादा अग्रेशन दिखा के आपको पॉइंट स्कोर करने पड़ते हैं। 30 सेकंड से कम का समय शेष इस दूसरे राउंड में यहाँ पर रह गया है। 1-2 का अच्छा कॉम्बिनेशन, follows it up with another one. Tamanna is looking good and solid. Yes, Gitika with a good counter punch. Just let her guard down. It's important to know when you land a punch, you let your defense down, which allows the opponent to come up with a good counter punch. That is what Gitika tried, and that is what she succeeded in. But before that, Tamanna had a great one too. खूबसूरत राउंड। 2 राउंड समाप्त हो गए हैं। 2 गोल्ड मेडल आज के दिन हरियाणा के आ चुके हैं। पहला गोल्ड मेडल दर्शना जीता, दूसरा गोल्ड मेडल प्रियांशु तमास ने हरियाणा के नाम किया। अब अच्छी तरह राइट है, जो तरह राइट पंचा उसके ज्यादा यहाँ पे हरियाणा से तमन्ना भी, गीतिका भी। दूसरे राउंड की कुछ सॉलिड झलकियां देखिए। इवेसिव एक्शन, डिफेंस बहुत ही बढ़िया तमन्ना का। Tamanna setting the pace in this bout. Gitika was forced to play the role of an aggressor because the points were going the way of Tamanna. This is the last round, and Gitika will have to have an exceptional last round to make sure that she wins. जी हाँ, काउंटर पंच अगर गीतिका से आया भी था तो वो सॉलिड लैंड नहीं किया, और अगर वो लैंड नहीं करेगा अच्छे तरीके से तो आपको उसके मार्क्स मिलने वाले हैं नहीं। हम तैयार, सिद्धार्थ तैयार, बदल तैयार, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क तैयार। 12वां दिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। हम फिट तो इंडिया हिट, ये नारा है यहाँ पर खेलो इंडिया का। और ग्रेट स्टार्ट, What a start by Tamanna. Whoa, that's another one. She is really landing those, and Gitika needs to watch out. She needs to get her defense. Her coaches need to talk to her more. Gitika's coaches, I'm saying, they are seeing what's happening. I'm seeing what's happening. You are seeing what's happening. They need to instruct her better. Better head movement. To evade punches, the most important way is to use your footwork and better head movement.
तमन्ना की कजन साक्षी बहुत जल्दी एक इम्पोर्टेंट बाउट करने वाले से ओलंपिक क्वालिफायर्स की। जी हाँ, चाइना यूहान में ओलंपिक क्वालिफायर्स है, वहाँ साक्षी विल बी फाइटिंग और उम्मीद है वही जलवा वही कमाल हमारे बॉक्सर्स दिखाएंगे जो हमारे रेसलर्स फिलहाल रोम में दिखा रहे हैं। दे हैव बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग, द लाइक्स ऑफ बजरंग एंड द अदर्स। Absolutely. Welcome back to this final round of under 48 किलोग्राम कैटेगरी। तमन्ना हरियाणा, गीतिका हरियाणा, हरियाणा के नाम गोल्ड पक्का, हरियाणा के नाम सिल्वर भी पक्का, 2 गोल्ड मेडल पहले आ चुके हैं। तमन्ना यहाँ पर ज्यादा प्रभावशाली नजर आती हुई, नो डाउट अबाउट दैट। उनका डिफेंस भी सॉलिड, और जब जब काउंटर पंच आता भी है, गीतिका से प्रॉब्लम रही है कि वो सॉलिड नहीं लगता है। वो आम दर्शकों को देखने में लगता होगा अरे इन्होंने मारा, मगर जजेस की निगाहें बड़ी पैनी, और उन निगाहों में आपको समाना होगा मार्क्स के जरिए। Too close, she needs to get away here. Tamanna, that is. चल हाँ चल बेटा, अपना अटैक बना लास्ट। She will be confident and she looks confident because she's not upping the pace. Tamanna, and all she needs to do is now just pace it right. There's not enough time. The bell will be going any moment. There it is. This bout has ended. One more time, it might sound very cliched, but the fact remains gold has to go to Haryana, silver has to go to Haryana, because both these boxes belong to the rich state of Haryana. Why do we say rich? We say rich because of the potential, rich because of the number of sports people Haryana has given over the number of years. Absolutely. And across sports, and that's the beauty of that state, especially in the last 10 or 12 years. Of course, third edition of the Khelo India Youth Games. The first was won by Haryana. The second edition was won by Maharashtra. Will Maharashtra become the first state in the young and brief history of the Khelo India Youth Games to defend their championship? Tamanna is the red corner, Gitika the blue corner. Will it be a unanimous verdict? We don't know. While unanimous point this season, winner in the red corner. It is Tamanna. गोल्ड की हसरत, गोल्ड की तमन्ना, तमन्ना की पूरी होती हुई। Hat-trick of gold medals. How about that for a start to the day by Haryana? It could not have come earlier for them. They have been trailing Maharashtra for a very long time, but they are making a concerted, forceful effort to catch Maharashtra, and they are catching them out cold early in this cold morning here at Guwahati. 3 out of 3 for Haryana. Tamanna being the latest. जी बिल्कुल। और सवेरे जब हमने शुरुआत की थी तो हरियाणा के 47 गोल्ड मेडल थे, अब 50 में था। आप हाफ सेंचुरी की मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारक आपको, और बहुत बहुत मुबारक तमन्ना को भी। Talent to watch out for in the future, and that is how she made it 3 out of 3 for Haryana. Silver also going to Haryana. Clearly, the main problem was Gitika at times got very, very close to Tamanna, and when you get so close, you don't have that leeway and you don't have the freedom to hit and to land those solid punches. You need the back lift and you need the follow through as well, Siddharth, and that was not there. The arm swing, you need space for that, time for that. The only thing that disappointed me was how close these two boxers were, but we didn't see a lot of uppercuts. That is something the coaches need to worry. A lot of boxing action is coming your way, so do